Ji, Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you. We are so very grateful that you've taken time out of your weekend and you're with us today. Uh, Let me start with a small presentation of the flame. Ji, uh, you're here on the Forum for Leadership and Managerial Excellence. A short form is flame, and the logo is Together We Glow. And I'm sure, inshallah, if you attend all the sessions, upcoming session, inshallah, we will grow with you because your participation means a lot to us. What is flame actually? It's a flame has got five pathways. जिसमें we have fostering school excellence, leading innovation in vocational education and training, advancement in workplace performance, mastery through CPD, and then finally engagement and research and conferences. So these are the five areas हम flame पे जिन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं. Or I'll go through now these one by one, just a short overview so that we give most of the time to our guest, Faisal Shabbir. Fostering school excellence is like we're looking at the improvement and development of school management. We've got a system in place. This is a system proposed by the FLAME experts. We call it the Integrated School Development System, ISDS. It's already been published as a book, and a system like it integrates world bed system into one holistic system. Now, school as a holistic unit, we look at improving the school as a holistic unit. In that, at a management level, we're looking at the school leadership training, and then we can prepare the schools for ISO 21001 certification. Now, there are total 6 cardinals. One is school leadership, school management, school teachers, students. Then we have the curriculum, the learning resources, and then stakeholders. So this ISDS captures all the 6 cardinals of a school in one holistic developmental approach, so that all the 6 cardinals move together. Because quite often हम schools के development में हम जिन चीज़ों को देखते हैं ना, आप देखेंगे कि कभी टीचर्स पे फोकस हो रहा है, स्टूडेंट्स इग्नोर हो रहे हैं, इन पे फोकस हो रहा है, स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो ट्रेंड नहीं है, प्रिंसिपल्स ट्रेंड है, स्कूल के करिकुलम में इंप्रूव नहीं कर रहा, सेकंड करिकुलम है वो हो रहा है, तो स्टेक होल्डर से कोई नहीं पूछ रहा, बेचारे वो जो ना वो वहाँ पे खुआर होते फिर रहे हैं, बार वो कंप्लेंट्स करते फिर रहे हैं, क्रिबिंग करते फिर रहे हैं. तो समहाउ एक या दो इंपॉर्टेंट कार्डिनल स्कूल के रह जाते हैं, बिकॉज हमारा फोकस अनड्यूली हमारा फोकस किसी एक या दो कार्डिनल्स पे हो जाता है. सो जो कार्डिनल्स आपसे रह जाएंगे ना, वो पुल इफेक्ट करेंगे, वो दिल पुल इफेक्ट और कीप बिहेविंग लाइक ड्रैगर्स, वो स्कूल को इंप्रूव नहीं होने देंगे. तो हमारे इस सिस्टम में ISDS में ऑल द 6 कार्डिनल्स आर डेवलप्ड टुगेदर इन अ प्लान फैशन, सो कोई कार्डिनल किसी से ना आगे निकले ना कार्डिनल किसी से पीछे निकले. तो इसमें दैट इज व्हाट स्कूल मैनेजमेंट के साथ हम वी आर लुकिंग एट टीचर्स डेवलपमेंट आल्सो. There's a number of skills flashed here. You can have a look at the skills. These are all the skills which are much more than the teaching skills. So teaching skills here is just a part of it. Other skills which teachers should have, but quite often lack, are the lesson planning skills, IT skills, assessment skills. We expect our teachers to make questionnaires, make question papers, but we are not sure, are the questions valid, are the questions reliable, what they have taught students, is the paper testing all those learning outcomes, is a question paper valid. And then कॉम स्किल, बिकॉज हमारे टीचर्स में एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, इवन क्लासरूम मैनेजमेंट, ये चीज़ें हमारे टीचर्स को नहीं पढ़ाई जाती हैं. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक डिप्लोमास, डिग्रीज, decision making skills, supervision skills, leadership development, and research skills. I mean, if I ask you, how many of you seen the last two happening in schools? Very rare, very rare. Then with the faculty development, we're looking at students development also. Students is one such cardinal of a school जो बेचारा हमेशा इग्नोर्ड होता है, सारे तजर्बे उसके ऊपर हो रहे होते हैं. If you look at it, teachers, we just take students as they are the empty slates. They just come here to learn the curriculum, pass examinations, get grades, and leave. And then what we churn out is a student having maybe good grades, but a weak personality. And this very student is unable to take ownership of his higher education, and also is unable to step into the practical world after his or her education. So we're looking at developing learning skills, IT skills, comm skills, presentation skills, decision making, teamwork,
organizing skills, supervision skills, leadership development and research skills. I mean, you show up your school जहाँ पर कि एक स्टूडेंट किस तरह की डेवलपमेंट हो रही होती है, एंड दिस डेवलपमेंट इज ऑलरेडी कैप्चर्ड इन इंटीग्रेटेड स्कूल डेवलपमेंट सिस्टम. The third thing which is important is curriculum. What we have as a curriculum is a set of books, textbooks, and some standards given by our educational governing bodies, and we just deliver that. We do not realize that that is a stagnant curriculum. We should improve it. We should make it student-centered. We should enhance the curriculum, not sit with the basics, but enhance the curriculum. And then we have is what the commensurate learning resources, which are there to support the curriculum delivery, to support the developmental level of the student, and to support the development level of the faculty as well. If your teachers are developed, your students are developed, your curriculum is okay, but your learning resources are not supportive, there you go. Things will come to a standstill. And the most important part, which is quite often ignored, it's stakeholder development. Now, who are your stakeholders? Your parents, your society, your government, okay, and all those who use your who use the output of your school, which is wherever your students go, are your stakeholders. So here, I mean, you will see that stakeholders, quite often parents are just kept to information sharing. Results are parent teacher meeting again, that's all. There's no further participation of the stakeholders. I mean, you got a highly qualified stakeholders sitting around you. Why don't you make use of stakeholders in school management and school leadership? So this ISDS suggests taking all these six cardinals together and developing school in one uh, organized, comprehensive, and a cohesive manner. The next thing is the leading innovation and vocational education and training. The concept is same. Again, you'll find those six cardinals. But here in school, we had the integrated school development system. Here we had the strategic training and evaluation management system, which integrates, again, world's best standards, ISO 29993, ISO 21000, and the system approach to training. It integrates all the world best concepts into one holistic development system. Rest all is same. Then is the third pathway is the enhancement of workplace performance, the work organizations, where we are looking at, again, developing the L&D of the workplaces, and training their management also, and offering soft courses to the employees with regard to the job skills training, comms and IT skills, and all CBT courses which are required, and then a leadership training. And with that, we are looking at the provision of CPD, the continual professional development courses, also in collaboration with international partners to deepen expertise and sustain professional growth. And the CPD pathways we are building up at the moment are the business leadership and management, education and training, healthcare and life sciences, soft skills and human capital development, engineering and industrial skills, technology and digital transformation, and finance and compliance. All these are still coming up, and we're looking at our international partners, all accrediting bodies to provide us certification, so whereby we can deliver these courses through the platform of the Flame. Next one is the research and conferences. In research conference, we got two parts. First is the research part, where will be issuing, inshallah, the Journal of Leadership and Educational Excellence. This will be a tri-annual journal, which means that there will be 3 issues per year. So the first issue is coming up, inshallah, in April. Now this journal will have 4 axes, and all of you will find at least one of the axes of your interest. The first section is the forum from the front lines, where we are contacting industry leaders, both in the corporate sector as well as educational leadership, uh, to allow us to conduct the interviews and publish their interviews for our readers to see how the best performing leaders have done to reach to that level of excellence. Then the second portion is the from the field, where we are inviting the working professionals like managers, teachers, principals, that without any formal interview, they can just send us their experience, just a small write up, maybe a paragraph or so, on the experiences of their field, leadership, education, assessment, self-development, whatever they want to share with us, we'll simply publish it. Third one is the emerging scholars. We will provide this platform to university undergrad students or even postgrad students also, जिन्होंने अपने रिसर्च को फॉर्मली पब्लिश नहीं करना, जिन्होंने रिसर्च को ये पब्लिश नहीं कर सके, और वो जो रिगरस मेथोडोलॉजी है वो फॉलो नहीं कर सके, वी आर हियर फॉर देम to make the research visible to the rest of the world. And the last one is the Next Gen Forum. This is a platform for school students. Now this is something strange. You will see from the boardroom to the classroom. I would say from classroom to the boardroom. This channel captures diverse level of knowledges at 4 different levels and put these in one place for all the readers
to read, to have something of interest from this general. So I request all of you present here, जो आप attend कर रहे हैं, कि please, I mean, submit your writings to us, write-ups to us. If you're working in a school, encourage your students. If you're working as a manager, as a professional, send your write-ups to us. We will publish it in the journal, and this will give you visibility, visibility to you, to your work, to your students, whereby your students, you will be standing among the world renowned leaders, or this will your reach will increase, your visibility will be enhanced. And this is the first issue coming up, volume 1, issue 1 coming up in April 2026. And we've already sent a call for the articles, and we are, mashallah, getting good, I mean, quality of articles from different areas. And we invite all of you, please do contribute. And how to contribute is to visit this website, flames-forum.com. Go to the page for certain conferences, and you will see how to submit your writings over there. And if you want to just shortcut that, you can just go to LinkedIn, or maybe contact Faisal Shabbir, contact me, go to LinkedIn, go to Facebook, and simply send this to us through whatever means you're comfortable with. So as I said, there are three types of conferences we're aiming at. Annual conferences: Flames Conference on Leadership Excellence, Flames Conference on Educational Excellence, and Flames Young Leaders Conference. These will be planned. We may go for, let's say, 3 conferences a year. We may combine all these 3 themes, 3 streams into one conference. But this will be announced, and we will invite all of you to kind of take part into these conferences. And as I said in the beginning, that we are looking at the partnerships and accreditations for building strategic partnerships and securing international accreditations, aligning with globally recognized standards, creating excellence through world-class standards. This is coming up. We're still working on that, and inshallah, very soon you will listen from our platforms that we have secured that. Thank you very much. This was a short brief about Flame, and inshallah, if we stay together, we will inshallah grow together. So at the end, a very warm welcome and a very note of gratitude to Faisal Shabbir sir, who has given his very valuable time to deliver a talk on this. Faisal Shabbir, as you all know him, because most of you are from his Facebook connections, he's an ex-naval officer. I've been serving with him. It was an honor to work with him. What a pleasure and what a pleasant personality he is. Uske baad we just remained in touch. Faisal, then he picked up a very right path into the maritime strategy. I met him for a profession. He did research PhD, or is now working at the Maritime Center of Excellence, and he's looking after the research part of that. His topic today is self-management. Over to you, Faisal. Over to you. Thank you, Dr. Iftikhar, I'm humbled with such introduction. I have learned a lot from you. I'll take another maybe 40 to 50 minutes to discuss self-management with you. Let me load the presentation. I'll just take a minute. I hope it is visible to everybody now. Before starting a presentation, formal, kindly switch off your mics. First of all, let me explain. If you see this roadmap, I had gone to TCF as a volunteer in their Rebel program that is conducted for 8th class students for 6 weeks on every Saturday. And there I had, my purpose of going over there was to volunteer and to teach the students. But when I went over there, instead of
ठीक है, उनको भी कुछ सिखाया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आई लर्न दिस थिंग व्हाइल आई वाज देयर. व्हाट दे टॉक्ड अबाउट इज कि कैसे शुरू होती है आपकी, हाउ यू रीच्ड डेस्टिनी. थॉट से शुरू होती है, और उसके बाद देन थॉट्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्शंस, और एक्शन से जो कि रिपीटेटिव होते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हैबिट डेवलप होनी शुरू होती है. एंड ग्रेजुअली जब आपकी वो हैबिट बन जाती है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. जैसे वो एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि जी यू स्टार्ट विद 1%, देन यू ग्रेजुअली डेवलप अ हैबिट slowly and gradually, और फिर उसके बाद it becomes a character, and then it leads you to the destiny. This was a wonderful experience of volunteering with the Citizen Foundation schools, and I learned a lot, and this is the path to be on the right path, I would say, and build a, I would say, direction for yourself from thought to your destiny. Let's move on to the uh, uh, formal presentation. Uh, First of all, I would pose a question for all of you. Like, what one thing would you are doing now that is if you did on regular basis would make a tremendous positive difference in your personal life? कि आप क्या ऐसी चीज करना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं की, जिससे आपकी लाइफ में कोई एक पर्सनल लाइफ में कोई एक पॉजिटिव ट्रिमेंडस किस्म का डिफरेंस आएगा. इसका आप you can write down the answer, or you can think in your mind कि क्या चीज ऐसी हो सकती है, and then as we move forward we'll deliberate upon के what should be the answer to this question. Let's move forward. ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें सबको देखने को मिलती हैं in our working life, in our personal lives. Like you see, if we see the problem, there are going to be three problems. I'll just share with you quickly. There's so much to do and there's never enough time. I feel pressured and hustled all day, every day, 7 days a week. I have attended time management seminars and I have tried half a dozen different planning systems. They have heard some, but I still don't feel I'm living the happy, productive, peaceful life I want to live. I think some of us can correlate with whatever is written here. So that is the problem. And we'll all together try to find some solution to such problems. Let's see the other problem. I've set and met my career goals and I'm having tremendous professional success, but it has cost me my personal and family life. I don't know my wife and children anymore. I'm not even sure I know myself and what's really important to me. I have to ask myself, is it worth it? Corporate world mein, you have to work day and night. You are busy. Jaise wo, I went to somebody to meet somebody and he said, I have been observing my children growing up horizontally, not vertically. I said, what do you mean by that? He said, I get up, I come to the office early morning and I go back late at night every day. And it is mostly applicable on weekends also. So when I go, get up and come, उस वक्त भी बच्चे सो रहे होते हैं, और जब वापस जाता हूँ तब भी बच्चे सो रहे होते हैं. तो actually they are on the bed and I am watching them grow, not getting time to play with them, to have interaction with them. So this is the state sometimes. Coming over to problem 3. I want to teach my children the value of work, but to get to them to do anything, I have to supervise every move and put up with complaining every step of the way. It's so much easier to do it myself. Why can't children do their work cheerfully and without being reminded? ये हम सारों को आजकल फेस करना पड़ता है. We talk about generation Z, we talk about generation A, और ये चीजें हमें नजर आती हैं कि हम क्या करें. मतलब instead of asking them, parents now prefer कि जी खुद ही काम कर लें बजाय बच्चों को कुछ कहने के, because they are not going to do that probably. So probably our way of asking them is not correct. Maybe that might be the reason. But there is something, there is some problem. Let's see. So we can really, if we take out the gist, maybe inefficiency, not able to do more in less time. Probably we are applying bad techniques and tools. We are busy in offices, lot of paperwork, not enough rest.
and ultimately our families are suffering. So if that is the reason we feel unsatisfied, unfulfilled, incomplete, frustrated, and क्या वजह है इसकी? Let's see. The problem is we want to reap what we haven't sowed. वो हम हार्वेस्ट करना चाहते हैं कि जी जो लगाया नहीं, और हम कहते हैं कि हमें शॉर्ट शॉर्ट टर्म, जैसे कहते हैं ना, क्विक फिक्सेस मिल जाए, कोई कुछ सोल्यूशन मिल जाए जिसका इंस्टेंट सोल्यूशन आ जाए, एंड we are curing symptoms instead of cause. We need to get into the depth of the problem and see कि cause क्या है जिसकी वजह से इस तरह के मसले हमें देखने को पड़ते हैं, जैसे मैंने शेयर किया आपसे 3 प्रॉब्लम्स पहले. And then we find cosmetics and shortcuts, कि everything is good. We show to the public कि जी we are doing very well and everything is going well, सब कुछ, लेकिन there are problems underneath which we need to cure. एंड सबने सुनी होगी वो वाली स्टोरी, गोल्डन एग्स वाली. एक मुर्गी गोल्डन सोने के अंडे देती थी, और उसको उसने कहा लालच में कि मैं उसको ज़िबा कर लेता हूँ तो सारे इकट्ठे मिल जाएंगे. इन द एंड वन डजंट गेट एनीथिंग. सो यू नीड टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. जैसे वो स्टीफन कवी ने कहा है कि जी प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे हमें वर्क करना चाहिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर अचीव कर सकें लॉन्ग टर्म, क्विक फिक्सेस पे ना आ जाएं. This takes us to personality ethics and character ethics. Basically, we need to focus on our roots, that is values, beliefs. जो टाइम टेस्टेड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं ना, उस पे जाना चाहिए. लेकिन जो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड कह लें, या अभी की जो आजकल जो है कि जी अपीयरेंस मैटर्स, किसके पास कितना पैसा है, हाउ यू एक्ट, एक मास्क पहना हुआ है, एंड we are showing it to the world कि everything is going smooth, and लेकिन that is actually hollow. We need to improve upon our roots, कि जितना ज़्यादा हम अपनी values, beliefs को strong कर सकते हैं, जो time tested हैं, जो कि universal principles हैं, like honesty, integrity, ethics. इन सारी चीज़ों पे हमें ज़्यादा concentration करने की ज़रूरत है. अगर हम इन पे करेंगे तो automatically appearance और behavior improve हो जाएगा. लेकिन क्विक फिक्सेस पे जाते हैं आजकल, which affects us in the long term actually. Eisenhower, very popular person, 34th president of the United States. He had been a military commander, NATO's supreme commander in World War II, जिसने नॉर्मैंडी लैंडिंग भी कराई थी. उसने बड़ी अच्छी बात की कि I have two kinds of problems, the urgent and the important. The urgent are not important and the important are never urgent. और इसको हम कहते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स. इसमें ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात हुई हुई है इसमें, और इसमें अगर हम देखें तो देयर आर सो मेनी अदर सॉल्यूशन जो लोगों ने शेयर किए, जैसे पोमोडोरो हो गई, फिर उसके बाद ABCD मेथड हो गया, परेटो प्रिंसिपल हो गया. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. ईट द फ्रॉग फर्स्ट, वो भी एक है कि सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम है वो दिन में आप कर लें, बाकी काम होते रहेंगे. तो डिफरेंट चीज़ें आई, लेकिन आई थिंक बाय फार अभी तक जितनी भी आइडियाज आए हैं हाउ टू मैनेज आवरसेल्व्स या टाइम मैनेजमेंट के, प्रॉब्ली आइजनहावर मैट्रिक्स इज द बाय फार द बेस्ट सॉल्यूशन एज आई सी. बट आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि इससे बेहतर हो सकते हैं. You see, there are different activities, urgent and important. You can write down, you can note down which ones are important and which ones are urgent, and as we move forward then we may realize कि कौन सी चीज किस बॉक्स में फिट होती है, important में होती है या urgent में, like mails, classes, visits, social media, reels, and having presence on Facebook, phones, picnics, functions, interviews. Just this can be non-exhaustive list, लेकिन ये कि I just mentioned 8 of them here. So coming over to the urgent activities, they are usually visible, they require immediate. ये ज़्यादातर लोगों में पॉपुलर होती है कि जैसे बाकी लोगों को जल्दी पड़ी होती है कि काम उनका जल्द से जल्द हो जाए, और they are considered as urgent.
फोन कॉल आ गई, कोई मीटिंग आ गई अर्जेंट, कोई सर की चीजें आ गई. And there are other kind of activities, those are important but not visible. And they have more to do with result, and they actually contribute towards what you actually want to do while working in the office, at home, or anywhere. Those are the important activities. लेकिन होता क्या है कि हम ज्यादातर urgent activities पे stress देते हैं, considering them as important. या इज एन हैव मैट्रिक्स है. बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें जो पहला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट वन, इट सेज इट इज फॉर क्राइसिस मैनेजर्स. हम लोग फोकस ज्यादातर Q1 पे रहते हैं. इमरजेंसी फायर फाइटिंग चल रही होती है कि जी काम खत्म करना है, आज भी रिटर्न जानी है, कोई लास्ट डे काम आ गए हैं, बॉस की तरफ से आ गए हैं, हमारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, बच्चों की स्कूल की फीस ही जमा करानी है, बिजली का बिल जमा कराना है, और वो सारी चीजें एक एक्यूमुलेट हो जाती हैं Q1 वाले बॉक्स में, जो कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट भी है. अब वो करना भी है काम, लेकिन उससे क्या होता है कि वी गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस, बर्न आउट अल्टीमेटली, एंड वी आर ऑलवेज फाइटिंग. और फिर होता है क्या कि हम उसके बाद उसमें ऐसा की चीजें आ जाती हैं, जैसे ये इफ यू कैन सी डू इट नाउ वाली, मेकिंग असाइनमेंट, सबमिट रिपोर्ट्स, preparation for tomorrow's talk, conduct exam, evaluation of activities, so much and so forth. And there are certain activities जिनको हम समझते हैं कि वो जो है ना अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट. मतलब वी नीड टू बिलीव कि वी कैन डेलीगेट समथिंग. तो वी नीड टू डेलीगेट, we should delegate routine tasks पे, taking into use short listing various options. We need to find people जो हमारे साथ काम करें कि who can do it for us, instead of we ourselves taking up those activities which are not important but urgent. So that also takes a lot of time, and we waste time on such activities. And then come ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, बेसिकली इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से लोग जंप करते हैं जब स्ट्रेस आउट हो गए, बर्न आउट हो गए, एंड देन दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ क्वाड्रेंट 4 एक्टिविटीज. दे फाइंड solace in escape zone. ऑफिस में they rely on other people to do their job. घर वापस आते हैं, they are stressed out, they waste time on mobile phones, reels, Facebook, things like that. And then we realize कि इतने घंटे उस पर भी वेस्ट कर दिए, and nothing to really seek gain out of it. लेकिन अगर हम आगे चलें और उसमें देखें हम क्वाड्रेंट 2 में, actually this is very important quadrant. We need to focus on this one. This is heart of self management आप कह लें कि which are not urgent. जब हमें पता है कि एक काम, let's say we normally see कि जी 30 जून को या फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, लास्ट डेज में काम करना है, तो why don't we start doing work well beforehand? अपने आप के लिए क्यों नहीं टाइम छोड़ देते? मतलब इसमें एक और भी सोल्यूशन होता है कि व्हेन यू टेक एनीथिंग टू योर बॉस, वो कहते हैं कि इसको ऐसे कर लें, उस तरह कर लें, उस तरह कर लें, तो उसका ये भी सोल्यूशन है, नॉट प्रॉब्ली नॉट द राइट वन, लेकिन उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स वेल बिफोर टाइम एंड वी कैन टेक अप फॉर सिग्नेचर और अप्रूवल मे बी ऑन द सेकेंड लास्ट डे, ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस भी करनी है तो यू हैव सफिशिएंट टाइम एंड यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट टू डू सच थिंग्स. तो इसमें यह है कि जब हम, और ये दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द ऑफिस वर्किंग एनवायरनमेंट, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन वी आर वर्किंग, नॉट वर्किंग रियली, इन अदर एक्टिविटीज. 9 to 5 की बात नहीं हो रही, इट इज वैलिड फॉर इवनिंग्स, जिसमें वी कैन डू स्पोर्ट, वी कैन इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स, फैमिली, उनको टाइम दे सकते हैं. तो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उत्तर के लिए भी हम टाइम निकाल के रखें कि हमने, क्योंकि वी कंसिडर कि दे आर नॉट अर्जेंट, तो हम अज्यूम भी ये भी कर लेते हैं दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. एक्चुअली दे आर इम्पोर्टेंट. किसी की बर्थडे है, किसी की कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई इस तरह की चीज है, सो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दोज थिंग्स वेल बिफोर दैट टाइम. ये नहीं होना चाहिए कि अचानक कॉल आती है कि जी आज तो बच्चे की बर्थडे थी तो केक लेके आना था, एंड यू देन फॉरगेट, एंड देन यू से चलो रात को लेट नाइट कर लेंगे या समथिंग टू दिस इफेक्ट. तो उसमें यह है कि यू नीड टू बी अ लिटिल फॉरवर्ड लुकिंग. जब उसमें हम थोड़ा सा हो जाएंगे तो दैट प्रॉब्ली वी आर बेटर ऑफ.
एंड वी आर नॉट स्ट्रेस्ड। और उसमें अगर दफ्तर की बात करें तो उसमें अगर कोई आपने लॉन्ग टर्म प्लान है, कोई विजन मिशन के हिसाब से आपने काम करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है, अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना है, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट ग्रेजुअली, इंक्रीमेंटल काम करते रहें साथ साथ, ताकि वो बाय दैट टाइम की जब जरूरत है तो वो एक अच्छा काम निकल आए और अच्छी तरीके से अच्छे रिजल्ट्स उसके आए। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। लेकिन होता है इट्स नॉर्मली वी रिमेन इन द क्वाड्रेंट वन, जहाँ पर हर चीज की अर्जेंसी होती है। जैसे वो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वी नीड टू डिसाइड एंड शेड्यूल आवर एक्टिविटीज, जिसमें प्लान्स क्या हैं, आगे चल के कैसे काम करना है और कोई काम करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you think of all these quadrants, what feelings do you associate with this, with each quadrant? You can think over. That's how we see it otherwise. So choice of effective people is to stay out of quadrant 3 and quadrant 4, because urgent or not urgent, they are unimportant. Effective people shrink Q1 down to size by spending more time in Q2 activities. Q1 वाली activities मैं ये नहीं कहता कि वो जीरो हो जाएंगी। Q1 मेरे ख्याल में ज्यादातर अपने बॉस के लिए छोड़ दें कि उनको जब इमरजेंसी भी होगी तो उस वक्त कम से कम अपना जो काम है वो ना स्टैकअप हुआ हो, कि वही काम कंप्लीट करते करते रात हो जाए एंड यू आर स्ट्रेस्ड आउट। उसका बेहतरीन हल यही होता है कि टाइमली काम, थोड़ा सा आगे का विजन देखें और आगे का अप्रोच रखें, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो, ताकि जो काम है वो साथ साथ चलते रहें। वन इज नॉट स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। और जब वो होगा तो फिर नेचुरली वन गेट्स टाइम फॉर Q2 एंड अदर इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज। इफ यू रिमेंबर, एक शुरू में एक क्वेश्चन था कि व्हाट वन थिंग कुड यू डू यू आर नॉट डूइंग नाउ that if you did on a regular basis would make a tremendous positive difference in your personal life. And now you see, जो आपने सोचा होगा, that must be falling in Q2 most likely, कि जो important है but not urgent. And when they are not urgent, we don't do it. So we need to be mindful of the fact कि Q2 पे हमें स्ट्रेस देने की जरूरत होती है, इस पे वर्क करने की जरूरत होती है टू रिमेन हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड। अभी आप ये देखें, जैसे उन्हीं क्वाड्रेंट्स में इनइफेक्टिव पीपल जो हैं वो रेड में हैं और इफेक्टिव पीपल, एंड दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च, जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है। तो ये देखें कि उसने वाइट में जो शो हो रहा है, इफेक्टिव पीपल स्पेंड 65 to 80% ऑफ देयर टाइम इन क्वाड्रेंट 2, दैट इज डिसाइड भी कहते हैं, डू, डिसाइड, डेलीगेट, डिलीट। और उनका ज्यादा टाइम क्वाड्रेंट 2 में गुजरता है और कम टाइम उनका क्वाड्रेंट 1 में गुजरता है। एंड दे बिलीव इन डेलीगेशन ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि जब काम कर रहे होते हैं, वी एज्यूम एज अ लीडर, आई वुड से वी नीड टू सी कि हम डेलीगेट कितना कर सकते हैं। वी नीड, इट इज आवर core responsibility, although it is not explicitly written, लेकिन होता नहीं है ऐसे। We need to groom whoever is working under us also. Once we groom that person, उसमें help ये भी हो जाती है कि कल को अगर कोई काम होता है तो that person can also undertake and share the responsibility and work also. तो उसमें हमें डेलीगेशन करनी चाहिए और हमें लोगों को भी ग्रूम करना चाहिए जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, ताकि they can also reach the higher level of, I would say, leadership positions with passage of time. Albert Einstein ने बड़े मजे की बात की थी, the significant problems we cannot solve, we face cannot be solved by the same level of thinking that created them. So we need to look beyond to find the solutions to our problems. So when we move on to quadrant 2, there is self-management, what we can do. If you see, everybody is focused on some aspect of life, some on work, some on pleasure, some on spouse, and some on money, some on family, some are self-centered, some are enemy-centered. यानी का फोकस ये होता है कि ये मेरी एनिमी है, इसको कैसे मैंने गिराना है या इससे मैंने कैसे आगे निकलना है,
कंपटीशन में होते हैं इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन। कुछ लोग पोजेशन में होते हैं कि जी मेरे पास नई गाड़ी आ गई, मेरे पास घर आ गया, मेरे पास ये चीजें आ गई। लेकिन हमें वी नीड टू रियलाइज कि ये दीज आर ऑल डिफरेंट प्रिंसिपल्स जिन पे हम लोग फोकस करते हैं। वी नीड टू बी, आई वुड से, प्रिंसिपल सेंटर्ड, यानी आई वुड से जो बेसिक यूनिवर्सल टाइमलेस लॉज हैं, यूनिवर्सल, जो हमारा इस्लाम भी सिखाता है, दूसरे रिलीजन्स भी सिखाते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन दोज। एम्पैथी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, उन चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्ली इग्नोर करते जा रहे हैं और हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होते जा रहे हैं। So, you see, there are tools for self-management. As I move forward, I'll discuss these 5 tools, starting with coherence. We need to really know where we are headed in our life. Being from maritime sector, this is an example of a ship. Ship का ये होता है कि if it has to go from one point to another point, it goes straight. लेकिन होता एक्चुअली ऐसे नहीं है. When ship moves, होता ये है कि जाना आपने नॉर्थ में होता है and you end up नॉर्थ वेस्ट. लेकिन उसमें जरूरत ये होती है, क्योंकि वो जाता क्यों है इस वजह से, इसकी वजह ये होती है कि टाइड, विंड, बाकी चीज़ों का इफेक्ट होता है. तो यू हैव टू कम बैक ऑन ट्रैक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो किस तरह आ सकता है कि थ्रू लर्निंग, थ्रू वेकअप कॉल्स, करेक्शंस अप्लाई करने की जरूरत होती है, सो दैट वी कम बैक ऑन ट्रैक. वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव, वॉट एवर आवर रोल्स आर, वॉट एवर आवर गोल्स आर, वी नीड टू कम बैक टू दोज. होता यही है कि हम आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं, 4 दिन करते हैं, वी लीव इट. कोई डाइट प्लान शुरू किया, थोड़े दिन किया, एंड देन वी गेट फेड अप एंड वी गेट आउट ऑफ इट. इस तरह की चीज़ों पे वी नीड टू बी कॉन्शियस एफर्ट थोड़ा सा अगर हम करें तो नेचुरली वी कैन रिमेन ऑन द path we want to follow in life. And that is what is required basically. Whatever we plan, whatever our roles are, whatever our vision and mission are, there has to be harmony between everything what we do. If there is harmony between everything what we do, whether it's with friends, with family, with an office working environment, for our own selves, we need to be focused and we need to, जैसे हम digress हो, we need to come back so that whatever we want to achieve in life, in our personal capacity, in our professional capacity, we can do that. Then Q2 focus, which are important things, but not urgent. कहते हैं ना, prevention is better than cure. So that is the point that we need to prevent rather than prioritizing crisis. Crisis में हमें जाने की जरूरत नहीं होती. And I strongly believe that stress is nothing. It is on the individual, I would say. Individually, most of the time, stress तभी आता है कि जब हम Q2 focus नहीं होते life में. अगर Q2 focus हो तो कभी भी stress ना आए. There is a firm belief. आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा कि हम कहते हैं कि जी हम बड़े स्ट्रेस में हैं, लेकिन वो उसकी वजह ये होती है कि हम ज़्यादातर क्राइसिस में फंसे होते हैं, लास्ट मिनट काम चल रहे होते हैं. So do not prioritize what's on your schedule, but schedule your priorities. That's important. Coming over to people's dimension, इसमें एक बड़ी important चीज़ है. Schedules तो हम बहुत सारे बना लेते हैं, we planner बना लिए, सब कुछ बना लिए, लेकिन we need to remember this thing that people are very important, very very important. Or we need to, I would say, subordinate schedules to people instead of other way around. If somebody comes to us with any problem, any issue, in our personal capacity, in our professional capacity, मेरे ख्याल में we need to lend a ear at least. We need to listen to that person with the purpose of listening to the problem. Even if we can't solve the problem, at least, try it out. अगर कभी आपके पास कोई लेके आता है मसला और आप उसकी सिर्फ बात सुन ही लेते हैं बड़े गौर से, and even if you can't help, तो I would say कि 50% उसका मसला हल हो जाएगा. हमें efficiency बाकी कामों में दिखानी चाहिए, but when we are dealing with people, we need to be effective, no matter what.
वी नीड टू मेक अ रूल कि अगर कोई ऑफिस में आता है मिलने के लिए, चाहे किसी काम से भी कोई आता है, वेदर दैट पर्सन इज अ नायब कास्ट और अ सीनियर पर्सन, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड द सेम वे. He needs to be offered a seat and one needs to listen to that person. होता है क्या है कि आप ऑफिस में जाते हैं और वहां पर फोन बजना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं आप 1 मिनट बैठे, मैं पहले फोन सुन लूं, और 20 मिनट फोन पे बात होती रहती है, और अगला बंदा जो टाइम लेके भी आया होता है वो देख रहा होता है कि दिस व्हाट इज गोइंग ऑन. तो वी नीड टू रियली केयर फॉर द पीपल. एम्पैथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. और ये जो सारी चीजें डिस्कशन हो रही थी, इसमें बेसिकली वी नीड टू कीप इन माइंड होता ये है कि जब हम एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लेते हैं एंड वी कांट डू दैट, तो देन वी थ्रो इट असाइड. It should be taken as a servant, not master. If you plan to have exercise 6 days a week, you want to do running, you want to do cycling, you want to do swimming, gym, anything, और अगर कभी नहीं भी करने का दिल चाह रहा है तो just don't do it. Like it should be according to our style, what we want to do and how we want to do. We need not be very strictly bound by it. We need to be clear, actually, in broader terms, how we want to spend our life. Mother Teresa ने बड़ी अच्छी बात की थी. I think the world today is upside down. It is suffering so much because there is so little love in home and family life. We have no time for our children. We have no time for each other. There is no time to enjoy each other, and lack of love causes so much suffering and unhappiness in the world. So true, isn't it? So we need to have balance. And there are core dimensions. We need to focus on those. Coming over to physical, yes, that's very important. हमें अपने आप पे तवज्जो देनी चाहिए. मतलब आइडियली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, मेरे ख्याल में रोजाना 1 घंटा अपने आप को टाइम देना चाहिए फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, एटलीस्ट मे बी 5 days a week. Maybe you can skip the weekend, or if someday you don't want to do any physical exercise, so just don't do it. कोई भी दिल चाहता है, कोई एनी स्पोर्ट, किसी को फुटबॉल खेलने का है, आजकल पैडल चल रही है, या एरोबिक्स करनी है, या कोई जिम करना है, एनीथिंग, जिस दिन जो दिल चाहता है, वन शुड डू सम एक्सरसाइज. और फिजिकल में 3 चीजें होती हैं. टू टू हैव स्ट्रेंथ, टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड टू हैव एंड्योरेंस. स्ट्रेंथ के लिए मे बी जिम, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मे बी एरोबिक्स, and for endurance maybe running or cycling even. I'm more interested in cycling, so that's why I mentioned cycling. लेकिन ये है कि we need to focus on these areas and maintain ourselves. इसमें ladies को होता है mostly कि जी how we can do. Very common, at least one can go for walk. Aerobics कमरे में कर सकते हैं, exercise कर सकते हैं. आजकल तो ये चीजें काफी common होती जा रही हैं. You find people, lot of people, even ladies also, going for running and cycling and walk and such activities. लेकिन we need to focus on that part also. Physically अगर हम fit होंगे तो naturally health अच्छी होगी, और health अच्छी होगी तो then we can take up everything in life. Emotional and social. This is very very interesting. ये स्टीफन कवी ने भी कहा, और फिर उसके बाद अगर आपको देखें ना, हार्वर्ड की एक स्टडीज है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई थी for 85 years, which is still going on. वो longevity और health को और happiness को correlate करते हैं social interaction से, positive social interaction with people around. This is amazing. यानी आप ये देखें कि इसमें ना पैसा है, ना इसमें कोई और चीज़ है, लेकिन इसमें जो socializing है, that is the biggest aspect कि जिससे लोग लंबी उम्र पाते हैं, and they remain happy and they remain healthy. हार्वर्ड की स्टडी आप देख लें, मतलब 85 इयर्स जिन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी, दे आर नॉट इन द वर्ल्ड. और उसमें भी इंटरेस्टिंगली उस स्टडी में उन्होंने बॉस्टन के भी सबर्ब्स के, मतलब नॉट सबर्ब्स, इवन आई वुड से पुअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से भी लोगों को लिया, और उन्होंने हार्वर्ड के लोगों को भी लिया, और फिर उनको मॉनिटर करते रहे हर साल 2 साल बाद, उनके इंटरव्यूज, उनका डिस्कशन एंड एवरीथिंग. And that is still going on.
अभी भी वो चल रही है, 1934 में कहीं पर शुरू हुई थी। और उसमें एक चीज ही सामने आई थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टडीज, आईक्यू, एनीथिंग, हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी की रीजन यही थी कि दे वर सोशली कनेक्टेड with positive social connections. So I can't emphasize more on that. And of course, mental, that's very important. In a sense कि अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, that keeps, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज जो है ना वो बॉडी के लिए, तो मेंटल एक्सरसाइज भी करनी बड़ी जरूरी है फॉर आवर ब्रेन्स, जिसमें कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ लिखना, क्रिएटिव काम करना। मे बी सोने से पहले कोई एक पेज ही पढ़ लिया किसी चीज का, नॉट द फेसबुक रील्स, मे बी सम रिसर्च आर्टिकल, कोई ऑथेंटिक बुक, उसका पीडीएफ वर्जन, एक्सक्यूज मी, दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड स्पिरिचुअल, यस, स्टीफन कभी कहते हैं कि कम से कम दिन में 1 घंटा में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को भी टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अदर पीपल it is meditation early in the morning which is carried along for the whole day. हमारे केस में अगर फजर की नमाज पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी दिन गुजारते हैं तो नेचुरली दिन अच्छा गुजरता है। तो वो कनेक्शन भी एक बिल्डअप करना जरूरी होता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हमारा रहे, विच एवर द रिलीजन इज। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, तो हमारा अगर आप देखें ना तो 5 वक्त की नमाज को अगर ज्वाइन कर लें तो दैट मेक्स 1 आवर अ डे। और इन सारी चीज़ों का अगर बैलेंस हम रखेंगे, एवरी डे, एवरी अदर डे, स्किप हो जाए, डजंट मैटर, वी आर, इट इज़ इन आवर कंट्रोल, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन ये 4 चीज़ें हमारे बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए, विच हेल्प्स अस ग्रो प्रॉब्ली वाइजर। सो यू सी, अगर बैलेंस एक चीज़ में नहीं होगा तो दूसरी चीज़ खराब हो जाएगी। अगर फिजिकल नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, नथिंग विल बी ओके देन। And if मुझे कहते हैं ना कि can success in profession compensate for a broken marriage, ruined health, ये भी होने को देखने को मिलता है हमें। I know a person did very well in the organization, CEO level, and then his children were suffering because उनके पास time नहीं दिया, and they didn't even study properly, and he was looking for कि इन्हें FA के बाद कहीं पर admission मिल जाए, and that person did himself very well. So what was the reason? The focus was on work throughout life and children suffered ultimately. So this also happens. So what are the advantages of self-management? It tells you that you are the most important person, master of your destiny. And recognizes the principle that people are more important than things and gives clear expression to purpose and values. Can't stress more on that. Although, because of paucity of time, we can have a session some other day how to actually implement all these things in at practical level. We can have another session because of paucity of time. We cannot continue. You just look into the mirror every morning and ask yourself, if today was the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? If the answer is no, we need to change something. And the last thing, no person on his deathbed wishes he had spent more time at the office. I'm sure you must have heard about Randy Posh. He said that find the best in everybody, just keep waiting no matter how long it takes. No one is all evil. Everybody has a good side, just keep waiting, it will come out. Randy Posh was, I'll just take 10 minutes, exactly 10 minutes, not more. Randy Posh was a lecturer, professor at Carnegie Mellon University in United States. And he was diagnosed with terminal cancer. And there was a tradition in that university that at the conclusion of the semester, those who were, for the students who were graduating in that period of time, every lecturer was supposed to give the last lecture. And just before that, he was diagnosed with terminal cancer, and he knew that he is going to die within the next 1 or 2 months.
So he prepared a lecture and gave it over there. That was a long one, but that is somewhere in 90s. And then he came in Opera Winter Show, and there he explained in a 10 minutes talk how he saw life. Just look and listen to him, what he says about life, who knows that he is going to die within next month or so, and he actually died later. So let's see this video, and then we'll come back to question and answer session if there is any. It's going to be 10 minutes. Thank you for your patience. So I'm reprising a talk that I gave in September at Carnegie Mellon University. There's an academic tradition called the last lecture. Hypothetically, if you knew you were going to die and you had one last lecture, what would you say to your students? Well, for me, there's an elephant in the room. And the elephant in the room is that for me, it wasn't hypothetical. I've been fighting pancreatic cancer. It has now come back after surgery, chemotherapy, and radiation. And the doctors tell me there's nothing more to do and I have months to live. These are my most recent CT scans. Pancreatic cancer has spread to my liver. There are approximately a dozen tumors. I don't like this. I have 3 little kids. Let's be clear. This stinks. But I can't do anything about the fact that I'm going to die. I'm pursuing medical treatments, but I pretty much know how this movie is going to end. And I can't control the cards I'm dealt, just how I play the hands. Now, if I'm not morose enough for you, I'm sorry to disappoint, but I don't choose to be an object of pity. And in fact, although I'm going to die soon, I'm actually physically very strong. In fact, I'm probably physically stronger than most of the people in this audience. So today's talk is not about death. It's about life and how to live, specifically about childhood dreams and about how you can try to achieve them. My childhood dreams, your childhood dreams. As a child, I had an incredibly happy childhood. I went back and rated the photo album, and I couldn't find any places where I wasn't smiling, right? I just had a great childhood. And I was dreaming, always dreaming. It was an easy time to dream. When you turn on your television set and men are landing on the moon, anything is possible. And we should never lose that spirit. So what were my childhood dreams? Being in the National Football League. This is one of the childhood dreams I didn't achieve, right? And it's very important to know that if you don't achieve your dreams, you can still get a lot by trying for it. There's an expression I love, experience is what you get when you don't get what you wanted. Now, I played Little League football for a long time, and I had a phenomenal coach, Coach Jim Graham, and he was old school. When I was at a practice, he rode me all practice. You know, you're doing it wrong, go back, do it again. You're sloughing off, you owe me push-ups. Just for 2 hours, it was relentless. And after practice, one of the assistant coaches came up to me and he said, yeah, Coach Graham rode you pretty hard. And I said, yeah. He said, that's a good thing because it means he cares. When you're doing a bad job and nobody points it out to you, that's when they've given up on you. And that's something that's really stuck with me, is when somebody is going to ride you for 2 hours, they're doing that because they care to make you better. So, next dream, Walt Disney Imagineering. When I was 8, my family took the pilgrimage to Disneyland in California. And it was this incredible experience, the rides and the shows and the attractions and everything. And I said, gosh, I'd like to make stuff like that when I get older. So I graduated from college and I tried to become an Imagineer. These are the people who make the magic. And I got a lovely rejection letter. And then I tried again after graduate school. And I've kept all of these rejection letters over the years. They're very inspirational. But then the darndest thing happened. You know, I worked hard and worked hard. And I became a junior faculty member, and I specialized in doing certain kinds of research. That's me. And I developed a skill that was valuable to Disney, and I got a chance to go there. And I was part of an Imagineering team, and we worked on something called Aladdin's Magic Carpet Ride. And it was incredibly cool. However, it took me over 15 years to do it and lots of tries. And what I learned from that is that the brick walls that are in our way are there for a reason. They are not there to keep us out. They are there to give us a way to show how much we want it. Do they have childhood dreams? I recommend you have good parents. I lucked out. I have great parents. This is my mother on her 70th birthday. Now, I am the blur in the back. I have just been lapped.
this is my father on his 80th birthday. There's this notion of have fun all the time, have a sense of fun and wonder. That should never go away. All right. My dad, what an incredible guy. He fought in World War II. He was clearly part of the greatest generation. Sadly, my dad passed away a little over a year ago. And when my mother was going through his things, that was when she discovered that in World War II, he was awarded the Bronze Star for Valor. In 50 years of marriage, it had just never come up. There's a real lesson in humility that I can learn from my father there. Now, my mother. Mothers are people who love you even when you pull their hair. And this was the kind of relationship I had with my mother. And my mother, speaking of humility, was always there to keep me in check. When I was going through graduate school and I was taking really hard examinations, I was home pretty much complaining and whining about how hard these PhD tests were. And she just patted my arm and she said, "We know how you feel. Just remember that when your father was your age, he was fighting the Germans in World War II." And then the day came when I got my PhD, and I was so proud. And my mother introduced me to everyone as, "This is my son. He's a doctor, but not the kind that helps people." The most wonderful thing my parents did was they let me paint my bedroom. I said one day, "I want to paint stuff on the walls." And they said, "Okay." So I had a rocket ship, and we lived in a ranch, so I wanted an elevator. I wasn't sure where it would go. And yeah, you can tell the nerds early, so that's the quadratic equation. But the great thing is that they let me do it. And they felt that letting me express my creativity was more important than the pristine nature of the walls. And I was really blessed to have parents who saw it that way. My parents taught me about the importance of people versus things. So when I got older and I bought my first car and I was so excited, I had this shiny new convertible. This is my niece and nephew, Christopher and Laura. And every month I take them for a weekend, so my sister and her husband would get a little break, and we go off on adventures. And I just showed up with my new car, and my sister's explaining to Chris and Laura, "That's Uncle Randy's new car. You can't get it dirty, da-da-da-da-da." And they're just cracking up laughing because over her shoulder, I'm casually opening a can of soda and just emptying it on the back seat. And they come running over. My sister says, "What are you doing?" I said, "It's a thing. It's just a thing." And I'm really glad I did that because at the end of the weekend, as I was driving them home, little Chris, who was about 8 at the time, had the flu, and he threw up all over the back seat of my car. And I don't care how much value you get out of owning a nice, shiny, pristine thing. It's not as good as I felt knowing that I made an 8-year-old boy not feel guilty just because he'd had the flu. Next thing, you better decide early on if you're a Tigger or an Eeyore. Tiggers are energetic, they're optimistic, they're curious, they're enthusiastic, and they have fun. And never, ever underestimate the importance of having fun. I am dying soon, and I am choosing to have fun today, tomorrow, and every other day I have left. If you want to achieve your dreams, you better work and play well with others. And that means you better live with integrity. Simple advice that you'll find hard to follow, just tell the truth. Second thing, when you screw up, apologize. There are a lot of bad apologies in America. A good apology has 3 parts. I'm sorry. It was my fault. How do I make it right? Most people skip that 3rd part. That's how you can tell sincerity. The last thing is that we all have people that we don't like, that have done things we don't like. And what I have found is no one is pure evil. If you wait long enough, they will show you their good side. You can't make them do it in a hurry, but you can be patient. Show gratitude. When I got tenure as a young faculty member, there were about 15 young kids who'd been working in my research lab. I took them all down to Disney World for a week on my nickel. One of my colleagues said, "This must have cost you an arm and a leg. How could you do it?" I said, "These kids just worked day and night for years so that I could get the best job in the world for life. How could I not do it?" I mean, gratitude is a very simple thing, and it's a very powerful thing. And lastly, I don't think complaining and whining really solves the problem. This is Jackie Robinson, first Black major leaguer, had it in his contract not to complain if people spit on him. All right? Now, I don't care if you're Jackie Robinson or if you're a guy like me who's only got a couple of months to live. You can choose to take your finite time and energy and effort, and you can spend it complaining, or you can spend it playing the game hard, which is probably going to be more helpful to you in the long run. Now, I told you this is part of a lecture series at Carnegie Mellon University, and it's important for you to know why I gave the talk.
Okay? The talk isn't just about how to achieve your childhood dreams. It's much broader than that. It's about how to live your life. Because if you lead your life the right way, the karma will take care of itself. The dreams will come to you. If you live properly, the dreams will come to you. I think it's great that so many people have benefited from this lecture, but the truth of the matter is that I didn't even really give it to the 400 people at Carnegie Mellon who came. I only wrote this lecture for 3 people. And we're no older, they'll watch it. Thank you. Any questions, please? किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई चीज शेयर करनी हो, anything you want to share, we are available. आपके टाइम पे डिपेंड करता है. अगर आपने आपका काम है, आप जा सकते हैं. Any question, you are always welcome to ask. Faisal, I just want to share one example here. I'll just take 2 minutes. Remember, Faisal, we did this workshop back in Dhanama, और उसमें हम लोगों ने एक जो ना एक्सपेरिमेंट rather एक डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज किया था. एंड दिस डेमोन्स्ट्रेशन वाज आई मीन वेरी इफेक्टिव. आपके लिए भी काम आएगा. मैंने क्या पढ़ा था मैंने कि ओके, सो व्हाट ही डिड वाज, उसने क्लास के सामने एक एम्प्टी बकेट रखी और उसने बड़े बड़े स्टोन्स डाल दिए. बड़े स्टोन, फैसल हंस रहा है बिकॉज फैसल आई थिंक ही न्यू इट. उसने बड़े स्टोन्स बकेट में डाल दिए, तो वो स्टोन्स ने बकेट को फुल कर दिया. अब उसने कहा कि इसमें जगह है कुछ डालने की. लोगों ने कहा जगह तो फुल हो गई है. तो देन ही व्हाट ही डिड वाज, उसने बजरी निकाली, ग्रेवल निकाली, जो छोटे छोटे पीसेस थे. उसने वो उसमें पूरा जो ना वो पैकेट उंडेल दिया और ग्रेवल ने अपनी जगह बना ली, और जहाँ स्टोन में जहाँ गैप था ना, वहाँ जाके सेटल हो गई वो. तो क्लास थॉट यार यस यू आर राइट, देयर वाज स्पेस इन बिटवीन, हमें तो समझ नहीं आ सकी जगह है बीच में. तो देन ही आस्क्ड अगेन कि इज द बकेट फुल. तो जवाब यस सर बकेट इज फुल. अच्छा, उसने एक और बैग निकाला सैंड का और सैंड उसमें उंडेल दी, और जो छोटे छोटे गैप्स थे ना ग्रेवल और स्टोन के दरमियान, सैंड वहां जाके सेटल कर लिया अपने आप को, और पूरा बैग सैंड का बकेट में चला गया. तो क्लास वाज शॉक्ड कि यार देयर वाज स्पेस फॉर मोर थिंग्स बट वी डिड नॉट रियलाइज. स्टोन्स गए, ग्रेवल गया, सैंड चली गई, और हमें नहीं एहसास हुआ. तो देन ही आस्क्ड इज द बकेट फुल. यस सर नाउ इट इज फुल. अब इसमें जगह नहीं है. उसने पानी निकाला और उंडेल दिया बकेट में, पानी जाके सेटल हो गया बकेट में जाके. तो देन क्लास पे शॉक है, सर ये हम तो कह रहे हैं बकेट फुल, आप उसमें चीजें डाली जा रहे हैं. तो देन ही स्टॉप्ड. उसने पूछा व्हाट इज द लेसन लर्नड हियर. तो सबने कहा कि सर देखिए हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, हम समझते हैं कि जगह नहीं है काम करने की. वी कैन टेक मोर टास्क, वी कैन टेक मोर शेड्यूल, वी कैन टेक मोर फोन कॉल, वी कैन टेक मोर सॉर्ट ऑफ थिंग. कि जगह होती है, हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में बहुत स्पेस होती है. तो सुनता था सेड नो, मैसेज ये नहीं है. अगर आप बिग स्टोन के पहले ना डालते तो क्या आखिर में डाल सकते थे बिग स्टोन को आप? एवरीबॉडी सेड नो. उसने कहा जी ये बिग स्टोन्स आपके लाइफ की वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फैसल ने क्वाड्रेंट 2 में बताई थी आपको. ये वो बिग स्टोन्स है. अगर आप उन चीज़ों को लाइफ में पहले एडजस्ट नहीं करोगे तो लाइफ का जो Q3 और Q4 है ना, और Q1 भी, वो कभी भी बिग स्टोन्स को बाल्टी में नहीं जाने देगा और आप हमेशा स्ट्रेस पे रहोगे. तो टेक केयर ऑफ योर बिग स्टोन फर्स्ट, योर सेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस, योर करियर, योर एम्बिशंस, योर ड्रीम, दोज आर बिग स्टोन्स. उनको पहले एडजस्ट कीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड कीजिए. दैट्स ऑल. मेरे तरफ से फैसल, now you can continue please. So thank you very much. If somebody has any questions, we can call it off now, sir. अगर कोई questions नहीं है तो. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. Please go ahead sir. Nice to see you first of all. Faisal, great lecture. Loved every word of it. और स्टीवन आर कवी के जो ये कार्डिनल्स रूल्स हैं चारों कोऑर्डिनेट के, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं. एंड आई लव्ड इट एज अ रिवीजन. वी फर्स्ट रेड दिस बुक बैक इन 1997 जब पीएन बुक क्लब ने ये हमको दी थी. तो दैट वाज ग्रेट. इसमें एक सवाल है मेरा, आई होप सवाल इसमें आपने बताया था कि मेडिटेशन है, फेथ है, और एक और 3 चीजें आपने बताई थी गालिबन, फॉर अ पाथ टू बेटर योरसेल्फ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 3 आपकी चीजें.
इसमें सर चार एस्पेक्ट्स चार होती हैं चार बेसिकली. दैट इज वन इज स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इज नमाज पढ़ना या सुबह बिल्कुल, उठ के करना. Then there is mental. Mental is for your brain activities, brain growth. I would say वो dementia और इस किस्म की चीजें हो जाती हैं when you are socially cut off and when you are not reading, writing, creative writing नहीं कर रहे, कुछ पढ़ नहीं रहे. That does not include social media browsing. And then there is physical. That's very important. One needs to do some exercise, some physical exercise, whatever you feel like, sir. It is a must. And then the fourth one is mental and emotional. जो मैं बात कर रहा था ना, हार्वर्ड स्टडीज भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हुई थी और बाकी सारी हुई थी कि longevity, happiness, that is beyond how much possessions we have, how much money we have, IQ कितना है, intelligent कितना है. Social interactions makes one live longer and happier. ये चार aspects हैं. When we need to keep a balance in all of these four aspects, I would say, या domains, कि जिसमें हमें focus करना चाहिए. And honestly speaking, I try to do that, sir, since at least last 10 years. नहीं, इसमें फेथ भी कहीं आपने शामिल किया था. Faith is spiritual, sir. Faith is spiritual. अच्छा, चले हम लोग whatever religion you have, at least उस पर थोड़ा टाइम लगाना चाहिए. इवन एथीस्ट भी जो है ना, वो कहते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए सुबह उठ के, लाइक वो बुद्धा वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट काइंड ऑफ, कि दैट गोज अलोंग विद यू फॉर द होल डे. चलें, you are moving very fast. You answer my question before I could ask. आप समझ गए मैं एथियस्ट पे आने वाला था, because there are people, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, but there are people who lack faith. तो आपने you jumped and you already answered. सर उसमें बेसिकली ना, आई वेंट टू चाइना लॉन्ग टाइम बैक, तो वहां पर मैंने किसी से पूछा कि आपका वाला एक क्वेश्चन पूछा कि व्हेन यू आर एथीस्ट, सो हाउ डू यू सी द मोरल फैक्टर्स एंड ऑल अदर फैक्टर्स, किस तरह से उसको लेके चलते हैं? कहते हैं देयर आर बेसिक प्रिंसिपल्स, एथिक्स है, वी नीड टू फॉलो. यानी वो भी एथिक्स को फॉलो करते हैं. दोज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. Apart from the religion भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यही सारी चीजें सिखाता है. एंड टू बी अनबायस्ड, मेरे ख्याल में सारे रिलीजन ही ऐसी चीजें सिखाते हैं कि वी नीड टू बी हैव इंटेग्रिटी, वी ऑनेस्टी, एंड वी नीड टू बी गुड विद अदर पीपल. तो वही चीजें सर एप्लीकेबल एथीस्ट पे भी होती हैं सच. बस great, that was my question. Excellent. At least we acknowledge that there are people who may not be religious, but they are ethical people are out there. बिल्कुल सर, ऐसे ही है डेफिनेटली. Thank you. ऑलवेज वेलकम सर. सर असद, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मिस्टर असद का क्वेश्चन कोई है? असद अली साहब का क्वेश्चन है. सर ही हैज बीन वेरी, मिस्टर असद जो है ना, ये इन्होंने ही मुझे बल्कि ड्रैग किया था शुरू में तो, कि टीसीएफ के साथ ज्वाइन करूं उनके वॉलंटियर वर्क में. And he is doing a wonderful job since so many years. असद साहब, आप सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली जैसे आपने भी बोला कि we were there to inspire, but we came back enthused. ऐसे ही तो है. अभी मेरे साथ भी वही कैफियत है, और मैंने उसको कुछ लिख भी दिया आपके लिए कि आपकी पहली स्लाइड जो थी, नॉर्मली वी यूज टू मतलब अप्लाई दिस स्लाइड on underprivileged और disadvantaged strata of society. जो बच्चे हैं जिनके बड़े ख्वाब होते हैं, जिनके पास कोई मतलब कहते हैं ना कि nothing is granted for them. For us at least 3 meals are taken for granted, but for them even 3 meals are not. लेकिन जिस तरह जिस खूबसूरती से आपने स्लाइड से आगाज किया, and that applies on us also actually. ये सारा जो साइकिल है, it simply applies. So no questions actually. There are so many answers, but we need to reflect, or we need to see that answers are there. So thank you, really thank you. आपका मैंने ये मैसेज पहली स्लाइड जो है वो अपने पूरे हमारी जो फ्रेटर्निटी है 500-600 वॉलंटियर्स की, उससे शेयर की कि we use it with class 8 graders, लेकिन now we are using for ourselves also. So this is the very circle of important, life. sir. हमारी अपनी लर्निंग होती है इन चीजों से. Thank you so much. Thank you so much. बिल्कुल सर. Thank you. Anybody else? This book be by tomorrow. This will be available, or you can go through it again.
जी, any question please? Okay. Miss Meher, sorry, not Mr. Mazhar. Mr. Mazhar Bukhari साहब, कोई question आपका है? Please go ahead. जी, जी, can you बिल्कुल, listen me? Yeah. Sir, we are computer science professionals. We rarely find such kind of talk. और मुझे पूछना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दिस सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अस, और ऐसे सेशंस आप अगर कंटिन्यू रखेंगे तो हमारी मज़ीद ग्रोमिंग होगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स के लिए ऐसे कम मौके मिलते हैं. आई अप्रिशिएट यू. बिल्कुल सर, we'll inshallah continue with such topics which are of general interest and for grooming of professionals and public in general, I would say. Mr. Mazhar, आप LinkedIn पे हैं आप? जी. है तो हमारा जो फ्लेम का पेज है LinkedIn पे, आप काइंडली इसको अगर ज्वाइन कर लें तो यू विल कीप गेटिंग ऑल द अपकमिंग शेड्यूल्स जो सेक्शंस हमारे होंगे. यू मोस्ट वेलकम. आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, अटेंड कीजिए. आपके पास कोई टॉपिक शेयर करने के लिए आप शेयर कीजिए, बिकॉज वी आर ऑल विलिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी. जी, श्योर, इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. जी, जज़ाकल्लाह खैर. बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का और जो ना अप्रिशिएट करने का फैसल साहब के लेक्चर को. एनीबॉडी एल्स, कोई और किसी ने पार्टिसिपेट करना है? जी, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. मिस Nadia Roj, please go ahead. Okay, thank you very much. I have a question. In our daily lives, it is common to experience moments of low energy or lack of motivation. So when we feel unmotivated or lazy, can you please suggest a few strategies? How can we go back to track? Like instead of being lazy, we have to get back, feel that energy that help us in those particular phases of life that are not very welcoming or positive. If you have, otherwise. That's an interesting question, but it has some kind of technical answer, I would say. As I see it, if we sleep well on time and we eat the right things at the right time, probably, so our metabolism will stay right, and probably we won't be lazy and we'll be energetic. इसमें वी डू नॉट रियलाइज कि आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया पे हम एक्टिव होते हैं, वी गो टू स्लीप 11 o'clock 12 o'clock at night and we get up early sometimes. नींद नहीं पूरी होती तो यू आर नॉट सो गुड एक्टिव. मतलब मैं आपको एक एग्जांपल एक छोटी सी देता हूँ कि जब एयरफोर्स में या जो एविएशन में लोग जाते हैं, इनका टेस्ट होता है जिसमें ये चैम्बर में उन लोगों को डालते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपको आहिस्ता आहिस्ता यानी अज्यूम करते हैं कि 20,000 फुट पे ले जाएंगे, और फिर जब 20,000 फुट पे उस चैम्बर में लेके जाते हैं, नॉट फिजिकली यानी उसकी क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट उस तरह की, और उन्हें फिर जब 20,000 फुट पे पहुंचते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप ना अपने कार्ड पे अपना नाम लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, बेसिक चीजें लिख दें, और वो लिख देते हैं. और फिर जब वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक लिखा, और जब वो नीचे वापस चैम्बर से निकालते हैं उनसे और उनको दिखाते हैं कि आपने क्या अपने फट्टे पे लिखा था, तो वो वो कीड़े मकोड़े डाले होते हैं, उन्होंने नाम तक अपना सही नहीं लिखा होता. रीजन ये है कि जब वो ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है. जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो अंडरस्टैंडिंग ऐसे लगती है कि दे आर वर्किंग इन फुल कैपेसिटी, लेकिन एक्चुअली उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं एज दे गो हायर. तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये होती है कि क्या इसको पायलट के तौर पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. एंड सेम इज समवॉट रिलेटेड टू योर स्लीप आल्सो. इवन मतलब अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, you won't be able to perform 100% the next day. And same goes, अगर खाना दोपहर को, जैसे लोग कहते नहीं है कि खाना ज्यादा खा लिया उसके बाद नींद आनी शुरू होगी, दफ्तर में बैठा नहीं जाता, that is another problem. यानी प्रैक्टिकल में आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू वोंट बी लेजी. और दूसरा प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें यू नीड टू ट्रेन योर माइंड. आप जितना अच्छा अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, और बार बार वो, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें एक शिप दिखाते हैं कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो इट ड्रिफ्ट्स बिकॉज ऑफ विंड, टाइड एंड एवरीथिंग. सो दैट गोज इन आवर लाइफ आल्सो.
हम एक track पे चलते हैं and gradually we tend to move in some other direction. So we need to give ourselves wake-up calls to come back. तो वो जो laziness वाला factor है और ये काम ना करने का factor है, probably that can be overcome through these activities कि जिसमें हम अपना खाने पीने का ध्यान रखें, अपना सोने का, exercise का, वो जो balance मैंने आपको बात की है ना कि उन चीज़ों चारों चीज़ों में balance अगर हम रखेंगे तो we'll be better off. I hope I make some sense out of your question. Very much everybody for patient listening, I would say, and we will be inshallah conducting such session, and thank you for the participation and very active participation. Thank you, Faisal. Thank you very much, Faisal. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. This was a nice session. और the flame, really grateful to all of you. अपने time निकाला. You were with us for almost more than an hour. Now almost one and a half hour. So inshallah, looking forward to your participation in future also. Just stay tuned. You will please keep following us on LinkedIn, Flames page, and the Facebook also. So inshallah, looking forward to see you in our future sessions as well. Once again, thank you very much, and all the best wishes to you. All the best. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Okay, Allah Hafiz. Thank you.